everyone, I hope you are all good. So we are going to learn on your favorite platform Learn Forward, and we are going to study from Feathercap. So the chapter name is chapter number 4, that is water in our lives. As we all know, water is very precious. We all need water to survive, right? जितने भी living things हैं, जितने भी living beings हैं on this earth, all need water to survive. The plants need water, human beings need water, and animals also need water to survive, right? So there are only non-living things which does not need water to survive, and all the other things need water, right? So we are going to study about how do we get water at our homes and what does the role water play in our life. So we are going to start the chapter now. Keep your books ready. Water in our lives, all our body functions depend on water. हमारे जितने भी body के functions होते हैं, the body हम जो काम करती है, it all depends on water. So you should know that our body is made up of 70% of water, and on this earth only 3% of water is available, which is fresh drinking water. We need water for drinking, bathing, cleaning and cooking. So we need water in our daily life for a lot of activities. We need it for drinking, we need it for cleaning, cooking and bathing, and a lot more. So water is needed for drinking, bathing, cleaning and cooking. Plants and animals also need water, as I have told you that all the living beings need water, and we humans also need water, and plants and animals also need water. Water falls on earth as rain. What is the source of water? पानी का source क्या है? पानी आता कहाँ से है? जो water होता है, it comes as a rain on earth. Rain water collects in a ponds and lakes. जो rain water होता है, then it where does it go? जो rain water होता है, वो जो lakes and rivers है, उसमें जाके collect होता है. So there are the two things where rain water collects, that is lakes and ponds. It becomes dirty when it go to lakes and rivers, as you have seen that there are many other aquatic animals which live in the rivers. So जो पानी होता है, that gets very dirty. It has a lot of germs, so it is not fit for drinking. It becomes very dirty. Some of it seeps through the ground. You have also learn about underground water. What is underground water? अंडरग्राउंड वाटर वो होता है जब पानी बारिश आती है और पानी सीप कर जाता है ग्राउंड में, मतलब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड के अंदर, एंड इट गेट्स स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड, सो इट इज अंडरग्राउंड वाटर. सम ऑफ इट सीप्स थ्रू द ग्राउंड, डर्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, एंड जो डर्ट होती है वो ग्राउंड पे रह जाती है और वाटर जो होता है वो सीप कर जाता है ग्राउंड के अंदर. So that is underground water. We draw this underground water by wells and hand pumps. जो underground water होता है, we can get this, we can use this by the two methods, that is wells and hand pumps. So जो wells होते हैं, you have seen in many places, जो wells होते हैं that is manually operated. आप हाथ से चलाते हो तभी उससे बाहर पानी आता है. That and other is hand pumps. Hand pumps and wells both are manually operated, and ये जो wells और hand pumps हैं, ये हमारे जो भी है अर्लियर टाइम्स में बहुत पहले से वेल्स और हैंडपंप्स ही यूज करे जाते हैं, एंड इन टुडे टाइम्स वी यूज समरसीवर्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड. So this is well and this is hand pump. You can see you have to put the bucket inside to get the water out, and hand pump you have to push this handle, and these are two sources of underground water. Next, we must drink clean water. We should always drink clean water. Otherwise, you can get ill if you drink the water which have dirt. Water from ponds or lakes is not safe for drinking. जो पानी ponds और lakes का होता है, वो safe नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये हमारी body में germs लेके जा सकता है, and it can make you ill. Well water is safer to drink than river water. जो well का water होता है, this it is safer to then drink river water. Why? जो वेल का पानी होता है दैट इज बेसिकली नन अदर देन अंडरग्राउंड वाटर विच सीप्स इनटू द ग्राउंड, और जो डर्ट होता है उसका दैट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. एंड रिवर्स में क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द रिवर, एंड उसका जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली, एंड देयर इज नो सैनिटेशन. रिवर्स का कोई ऐसे ध्यान नहीं रखा जाता है कि यू कैन जस्ट ड्रिंक द वाटर. सो इट वेल वाटर इज वे सेफर देन द रिवर वाटर. बट ऑल दिस वाटर कंटेन्स जर्म्स. जितना भी रिवर्स और आपका
ponds का पानी and well water also have germs because it is not covered. So the water is contaminated and it can make you ill. Germs can make us ill and अगर आप गंदा पानी पियोगे there are germs in it and it can make you ill. There are some methods by which can purify water. You have seen in your home as well कि आपके घर पे क्या लगा होता है, you have RO system, right? What is RO system? It help us to purify the water. So जो पानी आप पीते हो वो प्योरीफाई होके आपके पास आता है, so you just don't get any disease, right? So there are many methods of purifying the water. In the time when there was no RO, तब उस time पे people used to boil the water to make it free from germs. What are the methods of purifying water? First is chlorine. So first method is when chlorine is added to the water, it kills the germs and it makes the water fresh. We should filter and boil the water. So this is the another method, filtering and boiling. This is the another method where you can filter the water first and you can then boil it. So it makes the water free from the germs. Next, boiling is the best method of purifying water. So boiling जो होता है ये this is the best method. इससे क्या होता है, जितने भी germs होते हैं गर्म पानी में they all get killed. Boiling kills the germs. So boiling is the method where the germs are killed totally. So this is the process of boiling the water. This is basically filtration जहाँ पे क्या होता है impure water stays up. ये use किया जाता है. This is just a diagram where you are shown that there are a lot of impurities in the water and the impure water stays up. There is a lot of sand which stays there and this is gravel. This is छोटे-छोटे stones where the stones are heavier in weight so they settle down और जो पानी होता है that comes down slowly. ठीक है, और ये जो clean water है this is getting filtered here. So then green water, there are some purities still left in the water. So जो इसको हम filter करते हैं by using a funnel. This is funnel. So इसको जब हम filter करते हैं जो जितनी भी impurities हैं कोई भी sand particles हैं they stays up there and the water is you get the clean water here. And the last process is boiling. Boiling में क्या होता है when you put the water over the heat you boil it so जितने भी germs होते हैं rest of the germs get killed and it is ready to use. This is the method of a boiling and filtering. So next is city water supply. आपको पानी मिलता है but do you know where do you get this water? So we are going to learn from this. Water from river or lakes is collected in large open tanks. जो भी पानी आपका river और lakes में जमा होता है from rain, तो उसको बड़े बड़े टैंक्स के अंदर कलेक्ट किया जाता है. जो डर्ट होती है वो फ्यू डेज में सेटल डाउन हो जाती है. जैसे आपने देखा इस मेथड में भी जो डर्ट है जितने भी सैंड पार्टिकल्स है जो भी है इट गेट सेटल डाउन है. तो इसी तरीके से जो पानी जब बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है तो जो डर्ट होती है दैट गेट सेटल डाउन. इट टेक्स फ्यू डेज बट इट गेट सेटल डाउन. नेक्स्ट क्लियर वाटर एट द टॉप इज फिल्टर्ड. जो पानी होता है साफ दैट रिमेन्स अबव, वो साफ सुथरा पानी ऊपर रह जाता है. एंड देन वाटर इज मिक्स्ड विद क्लोरीन टू किल जर्म्स. एंड उस पानी के अंदर जो क्लियर वाटर होता है देन क्लोरीन इज एडेड टू इट. क्लोरीन से क्या होता है जर्म्स किल होते हैं. सो क्लोरीन की ऐड किया जाता है टू किल द जर्म्स. Water is collected in high tanks. You have seen a lot of high tanks. You might have seen सबके आसपास आपने देखा होगा there are a very high tanks where water is collected at the top. और जहाँ पे वो पानी collect होता है from there you get the water supply at your homes. It reaches our homes by pipes. जो हमारे पास पानी आता है that comes through pipes but before that it is collected in high tanks. So this is the process where how do you get the water at your home. This is the river. The water is taken by the tank. It is collected in tanks. Here water is settled for a few days where sand particles get settled down and clear water gets up. Then water treatment is done here. Here using the pump chlorine is added. Chlorine is added here. Water is purified. Then it is moved to pump and after the pump it is moved to the high water tanks. This is high water tank. ये आपको हर सिटी में देखने को मिलेगा. हर जगह water tanks are everywhere. यहाँ से जो पानी होता है थ्रू द पाइप्स यू गेट इट थ्रू द सप्लाई. दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर सप्लाई इज डन टू द ऑल द हाउसेस नियर बाय. और ये सप्लाई जो होता है फिर आपके घरों तक पानी पहुंचाता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ द हाउ डू यू रिसीव द वाटर. वी गेट वाटर बाय ओपनिंग द टैप एंड जब आप अपना टैप ओपन करते हो वी गेट वाटर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द होल सप्लाई. Next is safe drinking water. So why should we drink safe water? I have already told you because
the contaminated water had germs and it can make us ill. सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी जर्म फ्री, जो भी पानी आप पीते हो उसमें कभी भी जर्म्स नहीं होने चाहिए. इट इज सेफ टू ड्रिंक टैप वाटर फ्रॉम सिटी सप्लाई, जो सिटी में आपके हमने देखा कि पानी कैसे फिल्टर होके आता है इन द लास्ट डायग्राम. सो अगर आप उस टैप वाटर भी यूज करते हो फॉर ड्रिंकिंग, इट इज सेफ टू ड्रिंक. वाटर फ्रॉम अ वेल और हैंड पंप शुड बी ट्रीटेड विद क्लोरीन, जो पानी वेल से निकाला जाता है या हैंड पंप से निकाला जाता है, इट शुड बी ट्रीटेड विद क्लोरीन. वाई? बिकॉज जो वाटर आपका वेल और पंप्स में होता है, हैंड पंप्स में, दैट इज नॉट ट्रीटेड, उसके अंदर कोई भी जर्म्स किल नहीं होते हैं. एंड द वेल जो होता है आपका, दैट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, सो उसके अंदर जर्म्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. सो इट शुड बी ट्रीटेड विद क्लोरीन. इन डिजीजेस इट इज सेफ टू बॉइल टैप वाटर ऑल्सो. जब आप बीमार हो तो यू हैव सीन योर मदर बॉइलिंग द वाटर फॉर यू बिफोर ड्रिंकिंग. वाई? क्योंकि जब आपकी बॉडी ऑलरेडी आप उसमें बीमार होते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल साफ सुथरी चीजें, यू नीड बिल्कुल बॉइल्ड वाटर दैट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स. सो जब हम बॉइल्ड वाटर बीमार होते हैं, डिजीज होती है हमें कोई, तो वी ऑलवेज बॉइल द टैप वाटर एज वेल. नेक्स्ट इज सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर. अब वाटर को कैसे हैंडल करना चाहिए. यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर विच हैज बीन स्टोर्ड इन बॉटल फॉर फ्यू डेज, इट शुड बी क्लीन्ड. ओके, तो पानी जो है आपका, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको प्लेस कैसे करना है, कंटेन कैसे करना है, कंटेनर में रखना कैसे. वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन वेसल्स. जो भी वेसल्स होते हैं आपके पास घर में है, वो क्लीन होने चाहिए जिसमें आप पानी को स्टोर कर रहे हो, ताकि उसके अंदर कोई भी जर्म्स ना जाए. इट शुड बी चेंज डेली. यू हैव सीन मेनी पीपल की जो दे यूज घड़ा इन द summers to make the water cool, right? So वो भी जो use करते हैं, they should change the water daily, otherwise it can also cause illness because it can have germs in it. First wash your hands. जब भी आप पानी पीते हो, you should always wash your hands, then draw water by a clean container with a long handle. Never put your hands in the container. उससे क्या होगा, जो आपके हाथ के germs है, it can go into the water, right? So जब भी आप पानी ड्रॉ करते हो, किसी भी कंटेनर से निकालते हो, you should always wash your hands first and then with a long handle आप उस पानी को ड्रॉ करके you can put it in a glass, right? Here you can see the children are drawing the water from this container. Next is saving water. As you know, water is very precious and only 3% of fresh water is available for humans to drink. So we should always considering saving the water, ताकि जो आगे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो. Water is precious. We must use water with care. हमें पानी हमेशा संभल के यूज करना चाहिए. You should never waste water. It's a resource provided by nature and we should not overuse it. We must never waste water. हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. बहुत सारे ways है by which you can save water. Do you save water? It is really important to save water. There are some methods. When you brush your teeth, you should always close the tap, right? Closing the tap while brushing our teeth. आपको जब आप ब्रश करते हो, you should not use the running water जब पानी बहुत चल रहा हो and you are brushing. So उस चीज को आपको avoid करना चाहिए. Just close the tap while you are brushing your teeth. Using a bucket instead of shower while bathing. जब आप you are bathing, so you should never use shower. Shower से पानी बहुत ज्यादा waste होता है. Just use a bucket. Making sure the taps in your house do not leak. You should always make sure कि आपके घर में कोई भी टैप में लीकेज ना हो, क्योंकि जहां लीकेज होगी वहां पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा. Taking only as much water as we need to drink. हमें हमेशा उतना ही पानी लेना चाहिए जितना we can drink. We should never waste it. Turning off the tap properly after use. जब आप पानी पी लेते हो या यूज कर लेते हो, wash your hands by using the tap. You should always close it properly. After coming back from school, pouring the water left in our water bottle into the flower pots. आप बहुत बार जब स्कूल से आते हो, you have some water left in your bottle sometimes, right? So you should not waste it. You should not throw it. Just use that water for pouring the plants in your house. So we have completed the chapter, and this chapter also gives you a lesson that you should save water and by which you can save life. Okay. Now we will move to the exercise. First, pick the correct answer. Which of these does not need water to live? As we all know, all the living things need water to live. So chair is a non-living thing obviously, so it does not need a water to live. Second,
Which is the best method of purifying water? Filtering, boiling or freezing? Yes, we have learned boiling is the best method to purify the water. Answer in yes or no. First is, does tap water from city supply contain germs? No, because it is already filtered by many processes by which it makes us fit for to drink. Next, is well water safe to drink? क्या well water safe है drink करने के लिए? Yes, it is safe to drink. Third, is river water dirty? क्या जो पानी होता है river का वो dirty होता है? Yes, it is very dirty. Next answer. Answer the following questions. Question number 1 is, why do we need water? We need water to live. So, I am going to write just live here. You have to write this, we need water to live. Okay. Next part. Where does rainwater collect? Rainwater collects at two places, rivers and ponds. So write rivers and ponds. Next part. What is added to the water to kill germs? We know that chlorine is added to the water to kill the germs. CHLORINE. Fourth part, which water comes in ponds and lakes? So, which water comes in ponds and lakes? Rainwater. जो rain water होता है that falls in lakes and rivers and gets collected there. Next, what can make us ill? Dirty water can make us ill. The water which contains germs, contaminated water makes us ill. Last, list 2 ways in which you can help to save water. We should always close the tap while brushing our teeth. So I'm going to write here, close the tap while brushing. Next, you can write whatever you want. We have already studied many ways. I'm going to write here, you should always use a bucket instead of shower. You should use bucket for bathing instead of shower. Instead of shower. So we have completed this chapter. I hope you all have understood this. Thank you so much. Happy learning.